Assalamualaikum. Welcome back to another YouTube tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So students, today we are going to discuss blood agar, chocolate agar and other different types of agars and their use in microbiology lab and how we can use them. First we will discuss blood agar. So blood agar plate or blood agar contains mammalian blood, usually sheep or horse blood. Okay, if we are using blood agar, it means we have to prepare or to obtain horse or sheep blood, and then we will add specific concentration like 5 to 10%. Blood agar are enriched differential media used to isolate fastidious organism and detect hemolytic activity. Means blood agar is actually a selective medium and which is used for the growth of fastidious microorganism. अब fastidious microorganism कौन से होते हैं? तो actually fastidious microorganism are those microorganisms which require special nutrients or special conditions for their growth. Means these are somehow special microorganisms which require specific nutrients. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जिनकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर हों, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. और फिर क्या करते हैं कि फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जब हम ब्लड एगर प्रोवाइड करते हैं तो ब्लड एगर में जो ब्लड है, ब्लड इज़ एक्चुअली इनरिच कंटेन्स इनरिच न्यूट्रिएंट्स. तो ब्लड में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं. तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो माइक्रोफास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें हम लोगों के पास आ जाएंगे केपी वगैरह आ जाएंगे, क्लसबिला प्रोटियस लाइक. और इसके अलावा हम बात करेंगे तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. सो ये वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फेवर काज करते हैं, ठीक है. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए हम ब्लड एगर यूज़ करते हैं बिकॉज दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इनरिच्ड मीडिया. सिमिलरली हमारी बॉडी में जब फेवर होता है तो हम कहते हैं कि जी फेवर के केस में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या इसके तरह के रिलेटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं कि बेसिकली आरबीसीज की जो आरबीसीज पे इम्पैक्ट होते हैं और आरबीसीज को डिग्रेड करते हैं या उनको ईट अप करते हैं और बॉडी उसके रिस्पॉन्स में फिर ज़्यादा आरबीसीज बनाना स्टार्ट कर देती है. तो इट्स मीन आरबीसीज कंटेन ऑक्सीजन एज वेल एज आयरन, okay, in the form of hemoglobin. So that's why these are some essential nutrients for the microorganisms, and these are also known as some special nutrients for microorganisms. That's why we can say fastidious microorganisms are those microorganisms which require some special nutrients for their growth. So blood agar is essentially important for the growth of a fastidious microorganism. So here you can see in these slides, here we grown some microorganism like KP, and similarly KP means Klebsiella proteus, and similarly like Hemophilus influenza, you can see them, and these microorganisms were well grown upon a petri dish which was cultured with a medium known as blood agar. Okay, and you can even detect the hemolytic activity, means there will be chances of breakdown of RBCs once these microorganisms will use the RBCs. Okay, so the breakdown of RBCs will result in the hemolysis upon the petri dish which you can physically observe as well. So this is actually a blood agar and it's used for the growth of some fastidious microorganism or microorganism which require special nutrient content or which have special nutrient requirements. So further moving for chocolate agar. So chocolate agar is a non-selective medium. तो अच्छा, ब्लड एगर में और चॉकलेट एगर में डिफरेंस क्या है? मीन्स व्हाट आर द डिफरेंसेस विच वी कैन अज्यूम बिटवीन ब्लड एगर एंड चॉकलेट एगर. सो बोथ ऑफ द एगर, ब्लड एगर एंड चॉकलेट एगर आर सेम इन देयर कंपोजिशंस. तो इन दोनों की कंपोजिशन सेम होती है, मीन्स इनमें एगर भी मौजूद है और ब्लड भी मौजूद है. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? द डिफरेंस इज़ दैट इन चॉकलेट एगर वी यूजली एड हीमोलाइज्ड ब्लड, कि जो हीमोलाइज्ड ब्लड होता है, जो जिस ब्लड को हम हीट अप करके डीनेचर किया हुआ है एक्चुअली, ठीक है. तो ऐसे ब्लड को यूज़ किया जाता है चॉकलेट एगर में. लेकिन जो ब्लड एगर है उसमें इंटैक्ट फॉर्म में ब्लड को ऐड किया जाता है. लेकिन चॉकलेट एगर में हम सिर्फ ये डिफरेंस है कि हम ये करते हैं कि ब्लड को हीट करते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्लोली, ठीक है. और फिर क्या होता है कि ब्लड के जो सेल्स हैं दे विल बी डीनेचर्ड और डिसइंटीग्रेटेड. And in this situation, this is known as non-selective media because most of the nutrients will be emit from the blood cells. Okay, जब हम हीट करते हैं तो ब्लड की क्योंकि प्रॉपर जो सेल्स हैं उनकी शेप भी मेंटेन नहीं रहती और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी एमिट हो जाते हैं वहाँ से, ठीक है. तो एग्जिट हो जाता है उनका, जिसकी वजह से हम इसको क्या करें, नॉन सेलेक्टिव मीडिया. मीन्स द चॉकलेट एगर डोंट हैव सम हाउ इनरिच्ड न्यूट्रिएंट कंटेंट और स्पेशल न्यूट्रिएंट कंटेंट. तो चॉकलेट एगर पे हम क्या कर सकते हैं कि जो नॉन सेलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रो कर सकते हैं कि जिनके लिए हमें कोई स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं है.
they can grow upon general purpose media as well. So in such cases we usually grow like there will be some fastidious microorganism which will be able to grow on chocolate agar. तो जो fastidious microorganism वो भी chocolate agar पे grow कर सकते हैं, ठीक है. So this is not a difference, this is a similar and same, like chocolate agar and blood agar are same in composition. Similarly, this is a non-selective enriched media, and we can say those microorganisms which are fastidious can also grow upon chocolate agar. Here you can see we have quoted an example like Haemophilus influenza. Haemophilus influenza is a microorganism which can cause fever. Okay, so this microorganism is also able to grow upon chocolate agar. Moving forward to talk about special media. Special medias are those medias which contains enriched nutrient contents, or some special nutrients or specific nutrients are added just to inhibit or facilitate the growth of microorganism. Liquid media used to isolate pathogens from a mixed culture. कि हमारे पास एक mixed culture है जिसमें बहुत सारे microorganism मौजूद हैं. अब हम उस culture में से क्या करते हैं कि कुछ microorganism को isolate करना चाहते हैं कि एक की growth को enhance करें और एक की inhibit करें, कि बाकी ये unwanted microorganism हम सबकी growth को inhibit कर दें और एक जो चाहिए हमें desired microorganism है उसको हम grow कर लें. So we can achieve this by using special medias. Okay, the example include like Silentine F broth for the isolation of Salmonella and Shigella. If we want to isolate Salmonella and Shigella from rest of GNR or gram-negative bacteria, then how we can do this one? We can do this one by putting or growing these microorganisms in a special media. Okay. Alkaline peptone water is also a special media which is used for the growth of Vibrio cholera. Vibrio cholera causes actually a cholera, which is a disease in which usually we can say the digestive system problems arises, and we can say there would be watery vomiting भी हो सकती है और watery stool भी इसकी एक symptom है जो cholera है basically. तो watery stool is one of the best example of cholera. Okay. So if we want to detect Vibrio cholera, or if we want to detect Salmonella typhi, then or Shigella, we usually use special medias which includes like Silentine F broth is one kind of media, and alkaline peptone water is another kind of media which we can use to grow such microorganism which require some special contents to enhance their growth. Moving forward. Okay, hold on over here. We discussed some special medias. Now selective medias. So selective medias are also further subtype of selective, we can say special medias. Like in selective medias we usually select which one microorganism will grow. Okay, so like here the inhibitory substance is added to a solid media. हम क्या करते हैं कि एक इनहिबिटरी सब्सटेंस ऐड कर देते हैं एक सॉलिड मीडिया के अंदर, और उसका काम क्या होता है कि वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा. इनरिच मीडिया आर डिजाइन टू इनहिबिट अनवांटेड कमेंसल्स और कंटेमिनेटिंग बैक्टीरिया एंड हेल्प टू रिकवर पैथोजन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया. मींस इफ देयर आर मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया you can inhibit all of those bacteria which are unwanted or you don't need. So if you want to grow desired microorganism, then you can use selective media. To make us medium selective include addition of antibiotics, means we can add some antibiotics because antibiotics usually kill the bacteria. So if we will kill certain bacteria and we want to grow some specific bacteria, we can achieve this by using or adding antibiotics in a solid media. Or dyes, color substances will actually label those bacteria which we want to isolate, and certain chemical also inhibit bacterial synthesis or bacterial multiplication or reproduction as well. So that's why we can isolate desired bacteria. Alteration of pH, we can also alter pH, or combination of these means we can add chemicals, antibiotics, or we can alter the pH just to inhibit growth of certain microorganisms and to facilitate the growth of microorganisms. This is actually a major purpose or function or aim while we are using selective medias. Further examples include like McConkey's agar और McConkey medium, which is usually used for gram-negative bacteria और GNR. और gram-negative bacteria में हम लोगों के पास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ठीक है. उसमें हम लोग अगर स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें क्लेस्पेलिया प्रोटियस आ जाता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आ जाता है, ठीक है. और इनके अलावा भी हम लोगों के पास ग्राम नेगेटिव में काफ़ी सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिसमें निजीरिया गोनोरिया है, इकोलाई है. दीज आर सम ऑफ द मेजर और इम्पॉर्टेंट, या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी भी जिसको हम कहते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ग्राम नेगेटिव और GNR बैक्टीरियाज.
Okay, Levinson-Jensen medium is actually used for the growth of Mycobacterium tuberculosis, and you people know Mycobacterium tuberculosis is an organism which have mycoplasm in its cell wall and it lakes like peptidoglycan as well. So similarly, Wilson and Blade medium is used for Salmonella typhi. Okay, further potassium tellurate medium is used for the growth of diphtheria bacilli, which causes diphtheria. So Mycobacterium tuberculosis causes TB. Okay, tuberculosis, which is a disease of respiratory tract or of the lungs. Okay, or which, similarly Salmonella typhi causes fever, and we use Wilson and Blade medium for the growth of Salmonella typhi and Salmonella paratyphi. Diphtheria bacillus is actually grown upon potassium tellurate medium, right? So which causes diphtheria. It's also a disease. Okay, further here you can see there is a McConkey medium, and we have grown G and R gram negative rods upon it. Okay, and there are some of the Streptococcus microorganism upon this petri dish as well. So McConkey medium is also known as the differential medium as well. Okay, here you can see potassium tellurate medium. Here we grown the diphtheria microorganism. Okay, here we discussed already, like diphtheria bacillus is actually grown upon the potassium tellurate medium. Here you can see the bacillus microorganism. Like Levinson-Jensen medium is actually used for the growth of Salmonella typhi. We already discussed, means this can be used for the growth of like here we discussed for the growth of Mycobacterium tuberculosis. Okay, forward indicator media, those media which contain an indicator which changes its color when bacterium grows in them. कुछ ऐसे मीडियम भी होते हैं, मीडिया होता है कि जब उनमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं. जैसे ब्लड एगर एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड एगर में ग्रो करेगा तो वहाँ पे हीमोलिसिस काज करेगा. तो हीमोलिसिस से जो ब्लड का रेड कलर है वहाँ से ब्लड एगर का वो ब्राउन में कन्वर्ट होता जाएगा. ओके, सिमिलरली McConkey मीडियम है, McConkey मीडियम में भी हम लोगों के पास जो कलर है वो पर्पल हो जाता है या पिंक होना स्टार्ट हो जाता है. एंड Crinton urease medium, in Crinton urease medium we also usually observe color changes which is due to growth of microorganism. Here are some of the petri dishes where you can see their change in color, like there is a blood agar and there is a change in color over here, and so similarly you can see there is a change in color over here. Overall there is a, we can say, diverse change in all these three petri dishes based on growth of microorganism. कि जब टाइम के साथ माइक्रोऑर्गेनिज्म ने ग्रो किया तो यहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ उनकी जो पेट्री डिशेज है वहाँ पे वो जो एगर मौजूद है या मीडियम मौजूद है तो मीडियम का कलर भी चेंज हो रहा है, विच रिप्रेजेंट्स लाइक एंड सच मीडियाज आर आल्सो नोन एज इंडिकेटेड मीडिया. Okay, urease medium, here you can see, means after the growth of microorganism the color was changed from yellowish to pink. Okay, further differential media which has substances incorporated in enabling it to distinguish between bacteria. Certain media are designed in such a way that different bacteria can be recognized based on their colony color. तो McConkey अगर इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है जो कि लेक्टोज फर्मेंटर्स और नॉन लेक्टोज फर्मेंटर्स के बीच में डिफरेंस करता है. लेक्टोज फर्मेंट्स ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म के जो लोग लेक्टोज जो मौजूद होता है मीडियम के अंदर उसकी फर्मेंटेशन करते हैं और फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हम लोगों के पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ अ लैक्टिक एसिड. ओके, तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉन लेक्टोज फर्मेंटर्स होते हैं कि जो लेक्टोज की फर्मेंटेशन नहीं कर सकते. ठीक है, ये जो ग्लूकोज है उसको लेक्टोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते. जब ग्लूकोज लेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ पे मीडियम McConkey अगर पे कलर चेंज हो जाता है. लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जो कि नॉन लेक्टोज फर्मेंटर्स हैं तो वो क्या करते हैं कि ग्लूकोज को लेक्टोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उस मीडियम का कलर चेंज नहीं होता. ओके, फर्दर McConkey agar, here we are discussing McConkey agar in detail. Cultural medium designated to grow gram negative bacteria and differentiate them for lactose fermentation. कि gram negative bacteria में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जो कि क्या करते हैं कि lactose fermentation काज करते हैं. It contains bile salts to inhibit most gram positive bacteria. Crystal violet dye which also inhibits certain gram positive bacteria. तो हम लोग क्या करते हैं कि McConkey agar बनाया जाता है स्पेशली gram negative bacteria की आइडेंटिफिकेशन के लिए. ओके, एंड which are also lactose fermenters. और इसमें कुछ ऐसे constituents ऐड किए जाते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं. सो दिस इज एक्चुअली अ पर्पस ऑफ McConkey agar.
Okay, further lactose fermenters, pink colonies, non-lactose fermenters, colorless colony. So here you can see means those gram-negative bacteria which are lactose fermenters, which can convert glucose into lactic acid. Okay, so these will represent like this color, pink colonies होंगी उनकी, और कुछ ऐसे माइक्रो सॉरी यहाँ पे आप इसी पैटर्न डिश में आप दे सकते हैं, ये पिंक कॉलोनीज लैक्टोज फर्मेंटर्स की हैं, और ये जो वाइट कॉलोनीज हैं नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स की. ऐसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच कैन नॉट और विच डोंट हैव देयर एबिलिटी to ferment the glucose into the lactose. Okay, further transport media, we will discuss this transport media in next lecture. If you have any question, you can post your question. Stay blessed. Allah Hafiz.